Good evening. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the book back exercise and question answer for the lesson Navaprabhat, lesson 1, class 6, Gunjan book. Hope you would have seen the previous video, the line by line explanation of the lesson. If not, I'll give the link in the description box. You can go and watch the video along with the book and understand the poem and also understand the pronunciation. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, you can put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. So this is the part 2 video for the book back exercise where we will cover the grammar part and subject enrichment activities. भाषा ज्ञान from the language. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहते हैं. सो देर आर फ्यू वर्ड्स विच हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स. सो அந்த மாதிரி இருக்க டூ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸ் வாட் வி से अनेकार्थी शब्द. यू वुड हैव रेड इन द ग्रामर बुक इन द क्लास 4. कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஜாஸ்தி அர்த்தம் இருக்கும். ஸோ அதோட தான் வி से as अनेकार्थी. अनेक मीन्स many meaning. So not just one meaning, it will have many meaning, and when we read the sentence, we will understand what meaning we have to take for that word. So कविता में आए इन शब्दों के दो दो अर्थ लिखे. So you have to write two different meanings for this. को same meaning இருந்தா पर्यायवाची சொல்லணும், but here the topic is अनेकार्थी, so you should not write the पर्यायवाची शब्द. You have to write two different meanings for the same word. Okay, तो अर्थ लिखे ना two अर्थम எழுதணும். So two different meanings you have to write. So first one jug, sansar is world, and one is ek bartan is vessel, mug ன்னு சொல்றோம் இல்லையா jug. So one meaning is world, another meaning is vessel. Similarly for Arun, you have to write Surya. Surya, the spelling mistake is there, don't go with that. Another is Lal, red. So Arun, சாகையான redness வந்து spread ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் in the sky. Another thing is Arun is for you have to take for the sun. So Arun, Surya, Lal. Next is Man, Hriday is one, and another thing is Maptaul. In the ancient time, we used ek man means 40 kgs. Ek man ka borana 40 kgs மூட்டை அப்படின்னு அர்த்தம். So one meaning is Hriday or Dil, you can write the heart. And another meaning is Maptaul, measuring unit. It's a measuring unit. Okay. Next is Kanak is first one is gold, and Gehu is a wheat. Sona, Gehu. Jal is one, pani, water. Next one is Jalna, burning. Kriya, it's a verb. It means burn pandrathu. Jalna. Jalna. Okay. Next is Ambar is Akash. One is sky. Another one you have to write vastra, dress or cloth. Pitambar அப்படின்னு சொல்றோம், the yellow dress போட்டுட்டு இருக்கவர் விஷ்ணு. So one is ambar is akash, sky, or you can write gagan also. The meaning is same, gagan or akash, asman is for sky. Another meaning for ambar is vastra, cloth. Okay, dress. So the same word with different meanings are known as anekarthi shabd. So see here one example in the book, it is given ank, sankhya ya god. So अंक ना count, marks, गोद ना lap part of the body. So तुम्हारे गणित में कितने अंक हैं, what is the mark you have scored in maths, और तुम मेरे अंक में बैठो, you sit on my lap. Though I am using the same word here in the sentence, by reading the sentence I can differentiate what the meaning it is. Jug, sansar, ek bartan, world or one vessel. Arun is sun or redness, Surya Lal. Man is Hriday, Dil, mind. और मापतोल की इकाई, measuring unit of about 40 kgs in olden days. So मापतोल की इकाई ना, the unit that is used for the measuring thing. Next is kanak is sona, गेहूं, gold and wheat. Jal is pani, water. One other thing is jalna is burning, is an action word. Ambar is आकाश, गगन, sky. Another thing is वस्त्र, cloth or dress. Okay. नीचे दिए गए शब्द कविता में आए 3 शब्दों के पर्यायवाची हैं. प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची छांटकर उनके नीचे लिखिए. So you have to choose and write the same meaning word. This is पर्यायवाची. The words will be different but meaning is same. पर्यायवाची ना another same meaning words. So savera is morning, rahi is a traveler, and vihag is bird. So you have to choose the same meaning word. So savera ka morning, pratakal boar,
bor ka samay na it's a morning time. Patik is traveler, rahagir is traveler, musafir traveler, journey பண்றவர். Vihag is bird, khag is bird, pakshi is bird, nabuchar is bird. Nabna sky, charna moon. Sky la move ஆகிறது nabuchar. Okay. So you have to read the answers. Savera, pratakal, bor, subah. Rahi, patik, rahagir, musafir. Vihag, khag, pakshi, nabuchar. Next is the tukan shabd. So कविता में आई तुकान शब्दों की सूची बनाई. You have to take the rhyming words. So rhyming words in the sense ending matra should be same, the sound should be same. Ag jag, ag jag, g g. Tuti chuti, badi की मात्रा बड़ी की मात्रा. इंगे बड़ी u की मात्रा बड़ी u की मात्रा. Kholo lo. So the number of letters in the word need not be same, but the pronunciation, the sound at the end should be same. Kholo lo. Andhera savera. This is eki matra and ra sound. So this is how you have to pick. Okay. Same thing. Bikhera savera, fera savera. So these are the rhyming words where the sounds are same. Now here given example is tamra. So see, ta, ma is half here and ra. Idana reading sequence. If you want to know the different types of ra, go and watch the video. It's a very small video, but you will understand the basic. So tamra. In Hindi language, நம்ம மாத்ராக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து அதோட ஸ்வர் சவுண்டை வெளியே எடுத்துகிட்டே வரணும். ஸோ இப்போ த அப்படின்னா த கூட ஹலந்த் போட்டு அந்த சவுண்ட் இது ரெண்டு தான் சேர்ந்தாதான் த. இப்போ த எப்போ ஆகும்? த ஹலந்த் கூட சேர்ந்தாதான் த ஆகும். யூ கேன் நாட் ப்ரனவுன்ஸ் த கன்சோனன்ஸ் வித்தவுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்வர். அப்படி இல்லைனா ஸ்வர் இல்லைனா அது ஹாஃப் லெட்டர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் விச் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நவ் தாம்ரக்கு தக்கு த ஹலந்த் ப்ளஸ் ஆனால் இங்கே என்ன மாத்திரா இருக்குது? ஆ. ஸோ தாக்கு ஆன்னு போடணும். த ஹலந்த் ப்ளஸ் மா இஸ் ஆல்ரெடி ஹாஃப். ஸோ ம ஹலந்த். ஸோ ஒரு லெட்டரை ஹாஃப் ஆக்கணும்னா அது கீழே ஹலந்த் போட்டால் ஹாஃப் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இஸ் ர. இந்த ர இருக்குல்ல, ஸோ ரக்கு ர ஹலந்த் ப்ளஸ் மாத்ரா இல்லை. அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? நெக்ஸ்ட் ஒன் அந்தேரா. ஸோ ஆ தே ரா. திஸ் இஸ் ஏ ஸ்வர். ஸோ அப்படியே எழுதுங்க. ஸ்வர் கேன் நாட் பி ஃபர்தர் டிவைடட். தே. தேல என்ன இருக்குது? தேல ஏக்கி மாத்ரா. So the halanth plus eki matra. Next ra. So ra kuda halanth potu andera. So this is how you have to do the splittings. So the splitting of the letters from the word, the splitting of the sound from the word is known as varna vichaed. If you want to understand the splitting of the letters of all the different matras, I'll give the link in the description box. You can go and watch that video and understand how to split the different matras in Hindi language. ஒரு மாத்திராக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். தட் வில் பி வெரி ஈஸி. 1 மினிட்டில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ ஒரு மாத்திராக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் பார்த்து யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக். ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு सी द लॉन्ग वीडियो, आई गिव द लिंक ऑफ द लॉन्ग वीडियो ऑल्सो. यू कैन गो एंड चेक दैट. ऊपर दिए शब्दों के प्रत्येक वर्ण की एक ध्वनि को अलग अलग करके लिखा गया है. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு சவுண்ட்ஸை பிரித்து எழுதியிருக்கோம். வி ஹவ் ரிமூவ் த சவுண்ட் ஃப்ரம் த லெட்டர் அண்ட் வி ஹவ் ஸ்பிட் அண்ட் ரோட் इट. इसे वर्ण विच्छेद के. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द स्प्लिटिंग द लेटर्स और द साउंड फ्रॉम द वर्ड इज नोन एज वर्ण विच्छेद. इसके द्वारा शब्दों के बनने की प्रक्रिया, द प्रोसेस हाउ द वर्ड इज फॉर्म्ड, वी कैन अंडरस्टैंड वेरी ईजिली. सरलता से समझा जा सकता है. सो वी कैन मेक अदर्स टू अंडरस्टैंड एंड वी ऑल्सो कैन लर्न वेरी ईजिली how the word formation happens. When you know the which letter and the matra join பண்ணும்போது என்ன letter form ஆகும், என்ன word வருது அப்படின்னு தெரியும் போது the word formation becomes very easily. If you know this basic, you can write your own words when someone pronounces. Okay. So varna vichhed कीजिए. So you have to do the varna vichhed. So I'll show how to do the varna vichhed for these words. Ujjwal. So mainly you have to separate and write u, आधा ज, आधा ज. So आधा ज எப்படி போடணும்? ज க்கு கீழே ஹலந்த் போட்டால் it represent half j. आधा ज ना half j, v and l. So இப்போ u is a swar. So if you find any swar in the word, you cannot further divide it because swar is the smallest unit, right? So you have to write as it is u.
இதுக்கு அலந்தோ இல்லை ஒரு ப்ளஸ் போட்டு ஒரு மாத்திராலாம் கிடையாது. whenever you see the swer letter in the word, you have to write it the same way. You cannot put any halant or you cannot put plus and add any other swer matra. Next is j, consonant half j. So half j there is no swer letter, so we are putting the half j as it is. And the next one is also half j, so there is no swer sound, so nothing we have to remove. We have to just represent half j by making a halant. Next is ver. Here ver is ver எப்படி எழுதணும்? ver halant plus a. மாத்திரா இல்லைன்னா சேர்த்து எழுதணும். So write the same thing here, ver halant plus a, and then similarly க்கு la halant plus a. So that if there is no matra for any letter, you have to just put a, making the consonant half. So half letter represent பண்ணதுக்கு halant போடணும். halant போடணும்னா it will become wrong. So this is the answer. U plus आधा j, work வந்து ver halant plus a, then க்கு la halant plus a. Next is swarnim. The reading sequence is आधा s. sav சொல்லக்கூடாது. ஆधा s v swa. Next readingல r தான் படிக்கணும். ரேஃப்ல இருக்க r is half r. So ரேஃப்ல இருக்க r is half r and ni and ma. So க்கு half s, there is no swer sound. So write as it is, s halant. Then v matra illa, so we have to make it half and put a sound, v. Then r is already, rafler r is already half letter without any swer sound, so r halant. This is n halant kuda. Matra it is choti e ki matra, so you have to put e. Then ma halant plus a. Next is prabhat. So pra. So this is r oda different type la theriyum. This is r is padhenla irukku. Padhenla irukka r is always full letter. So the letter p is half here, right? So reading sequence la p first varnum, then r, pra. Inge matra illa. You don't see any matra here. So r is r ku endha matra illa. Then ba and th. So the rule is, if r ku minnadi, if any half letter or consonants வந்துச்சுன்னா, then the r will, to support this letters, it will go and sit here like this in padhen. This is the rule. Okay, so this you have to understand. If you want to understand the different types of r, then I'll give that link also in the description box. You can go and check to understand the different types of r. Now the reading sequence la per halant, இது ஏற்கனவே half letter, so you don't have to do anything. Write per halant, then plus r is in the full form, right? So r halant plus a, as it has no matra. Then ba, so ba halant plus a you have to put. Then the halant plus a. So this is the varna vichaed for prabhat. Next is kant, ka. This is anuswar and ta. So ka எப்படி எழுதணும்? ka halant plus a. This anuswar we have to represent by ang sound. Okay, ang. Then ta halant plus a. This is the varna vichaed. I have to replace this dot with the anuswar. Replace pandrena, the what rule I have to follow is kant. Dot ku apra enna irukku t. So t and t oda series எழுதுங்க. t d n. So what is the panchama akshar, fifth letter enna irukku? Na. So in the dot will be replaced with a half letter. So you have to write kant. In the kant dot எடுத்துட்டு you have to put like this. Now if you have to do the varna vichaed for this, then ka adha na ta. So this idan இந்த எப்படி represent பண்ணனும்? na halant. So adha na. So ka எப்படி எழுதணும் இப்போ? ka halant plus a. Then na is na halant plus ta halant plus a. So this is the way you have to write the varna vichaed for this. So for primary students, the anuswar will be told like this. If it is given like this, if you want to remove the anuswar and add the panchama akshar, then this is how you have to do the varna vichaed. So check your answers here. One, तत्सम वह संस्कृत शब्द है जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है. So tatsam, tadbhav, there are two types of Hindi words which you have to understand. Tatsam is a Sanskrit word that is used in Sanskrit word எடுத்து நம்ம ஹிந்தியில் சொல்கிறோம். ஸோ அந்த Sanskrit wordsக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா r ரேஃபில் வரும்.
or re ki matra varum. This is the identification. So re vechi varum where we will use the e ki matra grah அப்படின்றது வரும். இல்லனா r வந்து refல வர chances இருக்கு. 90% you can find that this is the tatsam word. இது Sanskrit word னு தெரிஞ்சிடும். जिनके प्रयोग जो कहते हो ना அப்படியே யூஸ் பண்ணுவோம். will not change it. So surya, chandra, dugdh इदान examples of tatsam Sanskrit words. भाषा के विकास के नियमों के कारण, so due to the development of the languages, जिन तत्सम शब्द का रूप बदल गया अंदर हम तत्सम शब्द माती हिंदी ले எழுத போறோம். அத तत्भव சொல்வாங்க. तत्भव. तत्सम is Sanskrit word, तत्भव is a Hindi word. जैसे सूर्य के बदल सूरज, चंद्र के बदल चांद, दुग्ध के बदल दूध. So this दूध, चांद, सूरज are the तत्भव words, Hindi words. Okay. So now कविता में निम्नलिखित शब्दों के लिए कौन से तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं. So you have to check the Sanskrit word for the given Hindi words. அப்படினா Sanskrit words தான் நீங்க எழுதணும். So नींद, निद्रा, उज्जला, उज्जवल, bright. नया, नव, सुनहरा, golden, स्वर्णिम, स्वर्णिम. Check your answers here. निद्रा, नींद, निद्रा, sleep. उज्जला, उज्जवल, bright. नया, नव, new. सुनहरा, स्वर्णिम, golden. किसी भी नाम को संख्या कहते हैं. So the naming words are known as nouns, right? The name of a person, thing, animal. आपका नाम मीना है, उंगलोड पेर है ना मीना. आप कोलकाता शहर में रहते हैं. So you live in Kolkata. I am telling the name of the place now. आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम गुंजन है. Your textbook name is गुंजन. मीना, कोलकाता, गुंजन, ये सब नाम. These are the names, यानी संख्या शब्द, they are the nouns. अब ये नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है. So இதே நேம் ஒரு ஸ்பெஷலாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா this is known as व्यक्तिवाचक संज्ञा. It's a proper noun where I am giving a specific name for the noun. புக்குன்னு சொல்லாமல் சயின்ஸ் புக், ஆர்டி சர்மா புக். சிட்டின்னு சொல்லாமல் சென்னை, ரிவர்ன்னு சொல்லாமல் கங்கா or the Kaveri. So when I am giving a special name for the noun, then it becomes proper noun, व्यक्तिवाचक संख्या. So जैसे रिक्त स्थान में दिए गए, so fill in the blanks ला கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா, गुंजन, कोलकाता, मीना. I am giving the direct names for that. So இதெல்லாமே व्यक्तिवाचक संख्या is a proper noun. परंतु नाम, name ன்னு சொல்றேன்ல, or शहर, city ன்னு சொல்றேன்ல, இல்ல bookன்னு சொல்றேன்ல, common I am just giving the common details. So இதெல்லாமே जातिवाचक संज्ञा, common noun. So when I am giving a special name, it is व्यक्तिवाचक. When I am telling the whole community, it is जातिवाचक. फुल जातीय நான் சொல்றேன். इसी प्रकार जिन संख्याओं को छुआ ना जा सके, and the nouns which is not touchable but we can feel it, we can express it. So அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுற ஃபீலிங்ஸ் ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் எ பர்சனை நம்ம சொல்லும் போது இட் இஸ் எ பாவவாச்சக் संख्या which is known as abstract noun. So जैसे प्यार, लव, सुख, हैप्पीनेस, मानवता, ह्यूमैनिटी, अभिमान, रेस्पेक्टफुल. So இதெல்லாம் we can feel it, so which cannot be touched. So these are the abstract nouns, பாவவாச்சக் संज्ञा. ஒருத்தரோட பாவத்தை ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் த பர்சன், திங் ஒரு அனிமல் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் பாவவாச்சக் संज्ञा. So we know the three types of nouns. Commonly the name of a place, thing, animal we say as noun. If I am giving a special name, then it is a व्यक्तिवाचक संज्ञा, proper noun. If I am telling for the whole community, for whole jati, it's a jativaचक संज्ञा, common noun. If I am expressing the state of a person, the feeling of a person, thing or animal, then it is a भाववाचक संज्ञा, abstract noun. So this is just a simple notes for you to understand. व्यक्तिवाचक is proper noun, special name mentioned. जातिवाचक is common noun, where commonly addressing the group of the people, name or thing, like nadi, शहर, river, city. भाववाचक is abstract noun, where I am telling the state of or the feelings or emotions or the conditions of a noun. The pyar, sukh, okay, happiness, sadness, childhood state or youth stage, budapa, old age state or state of a person, rich or poor, I am telling the state of a person. This all are the भाववाचक संख्या. So कविता में आए संख्या शब्द चुनकर लिखिए. You have to select few संख्या शब्द from the poem. You can pick any noun and write. So Arun is noun, Kiran is noun, Malay is a specific noun, व्यक्तिवाचक, Dhal is noun,
Rang is noun, Savera is noun, Vihago, Rav, Kant, these all are Prabhat, Savera, Kiran, Jal, Andhera, Rahi. It's a common noun. Okay. So all these things are Sankhya. Just for you to understand the different types of nouns. तो विषय संवर्धन गतिविधियाँ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ अपनी रुचि के अनुसार कोई एक गतिविधि चुनकर कीजिए. यू कैन डू एनी वन एक्टिविटीज़. सो इन कविताओं के आधार पर कवि सम्मेलन और अंतराक्षरी का आयोजन कीजिए. सो हियर द पोएट नेम्स आर गिवन and the poet names and poem name is given. You have to read this poem or have this poem in your hand and you can play Antakshari. Antakshari, you know, right? We have to sing 2 lines or 4 lines from the song and the next person has to continue from the last letter of the word which we have said. The last word or last letter or we have to start the next poem. You can do the Antakshari by seeing the poem of the different poets. Okay. यदि सूरज की पहली किरणें बात कर पाती तो हमसे क्या कहती. संवाद के रूप में लिखो. सो फर्स्ट सन रे वुड हैव टॉक्ड टू अस. व्हाट इट वुड हैव टॉक्ड. यू हैव टू राइट अ कॉन्वर्सेशन. दिस इज प्योरली ऑन योर इमेजिनेशन. संवाद, you have to do the samvad conversation. So what would have happened? You have to think, you have to imagine what the conversation would be. The first sun ray would have been doing with you or to the human beings. So it's just a creative thing, writing. So anyone can write anything. That's not a standardized. Whatever you feel, you can write it. So this is what I have given. But this is the format you have to follow. So dialogue delivery, this is the format you have to follow. The name of the person who is going to give the dialogue and the dialogue has to be written and the both are separated with a big hyphen. So when a big hyphen is given, you don't have to put the quotation marks for the dialogues. Okay. This is the format for Samvat. The first one, the first ray of sun. Hey Manushya, jag jao. So with exclamatory mark is given. So it means with an expressively the sun ray is telling, the first sun ray is telling, hey human being, get up. मैं आ गई हूँ. आई हैव कम. मनुष्य, अरे मुझे और 5 मिनट सोने दो ना. सो गिव मी 5 more minutes to sleep. Like that the human being is telling to the सूर्य की किरणें, to the sun rays. सूर्य की किरणें, now the sun rays. नहीं नहीं, तुम उठो और प्राकृतिक सुंदरता से अपने आप को स्फूर्तिला बनाओ. नो नो, you get up and see the natural beauty and make yourself so active. फुर्तीला is activeness ओட இரு அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. सो नाउ मनुष्य, चलो उठी जाता हूँ. ओके, नाउ आई विल गेट अप. नहीं तो तुम अपने तेज किरणों से हमें परेशान करोगे. अदरवाइज इफ आई एम नॉट गेटिंग अप, देन विथ योर शार्प सन रेज यू विल अगेन इरिटेट मी. सो द मॉर्निंग रेज फर्स्ट रे विल नॉट बी सो शार्प, राइट. सो द मनुष्य इज थिंकिंग एंड टेलिंग, इफ आई एम नॉट गेटिंग अप अगेन यू विद द शार्प रेज यू विल डिस्टर्ब मी. सूर्य की किरणें, नाउ परेशान नहीं, तुम्हारी भलाई करूँगी. आई विल नॉट इरिटेट यू, आई विल मेक समथिंग गुड फॉर यू ओनली. मनुष्य, वाह कितना प्यारा दृश्य है. हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज. मन को मोह लिया. इट हैज़ अट्रैक्टेड माई माइंड. धन्यवाद मुझे उठाने के लिए. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अप. So this is the conversation that would have happened between the human being and the first sun rays. According to my thoughts, you can write anything which comes to your mind. प्रातःकाल उठी कैस रघुनाथा, मात्र पिता गुरु नवाही माता. इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए कि आप सुबह कौन से काम करते हैं. सो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ दिस संस्कृत सेंटेंस एंड यू हैव टू राइट व्हाट वर्क यू विल डू अर्ली इन द मॉर्निंग. प्रातःकाल उठी कै रघुनाथा, मात्र पिता गुरु नवाही माता. सो दिस इज द संस्कृत सेंटेंस. सो द मीनिंग ऑफ दिस इस पंक्ति का अर्थ है रघुनाथ, द भगवान राम, श्री राम सुबह जल्दी उठते हैं. ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इन द सेंस ही गेट्स अप अर्ली around Brahma Muhurta. So whenever we get up in the Brahma Muhurta, the task which we do will go in a positive way only. So this is the time where the positive energies will be more in our surroundings. So Brahma Muhurtam is morely between 3:30 to 5:30. Matra Pita Guru Navahi Mata. So this in the sentence or the meaning है ना, इसका अर्थ है माता पिता और गुरु का सम्मान करें. We have to respect our mother, father and the guru. So what we have to learn from this sentence is हमें इस पंक्ति से ये सीखना है कि हमें अपने माता पिता और गुरु का आदर करना चाहिए. We have to respect our elders, parents and the teacher.
जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिकॉज दे टेक द बिग रोल इन आवर लाइफ, राइट? सो वी हैव टू रेस्पेक्ट देम. सो இந்த பங்கியிலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது? வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் इन पंक्तियों से हमें भक्ति, सो द डिवोशन, संतुष्ट द हैप्पीनेस भाव, एंड उत्कृष्टता इज एक्सलेंस. When you get up early in the morning and do the things, you can do the things in a better way, in an excellent way. So all this bhav, all these things we are able to understand from this line. And समय का सदुपयोग, you have to use the time in a proper way, time management. समय का महत्व, importance of time. जल्दी उठने की सोच, so we have to get up early in the morning. So all these things we are able to understand from this line. So सुबह उठ के what will you do கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல. So usually what we will write as a student, we'll study, we'll do some exercise, we'll do the housework, right? So सुबह उठकर मैं पढ़ाई, व्यायाम is exercise, पढ़ाई means पढ़िक्கிறது, study, घर साफ करना will clean the house, कि काम करती हूँ, I do the work. So if you do any other special work, you can write mention that also. इस प्रकार सवेरा जीवन की नई शुरुआत की सीख देता है, उसी प्रकार ऋतुओं में बदलाव की ओर संकेत करती है. इस भाव को ध्यान में रखकर कविता लिखिए. So like as the morning gives the symbolizes it's the start of the life, in the same way the change of the seasons also symbolizes the changes that occurs in our life. So change is the one thing which never changes, right? The bhava nama manasla vechittu we have to write a poem. Okay, so the morning is symbolizes the new start of the life, and the change of the season symbolizes the changes that occurs in our life. Keeping this in your mind, you have to write a poem. So this is a pure art integration which you can do. पाठ से आगे, क्या आप जानते हैं कि लोग सुबह सवेरा खुली हवा में सैर और व्यायाम क्यों करते हैं? इससे होने वाले लाभ के बारे में जानिए. सो दिस इज बेस्ड अपॉन द हेल्थ लिटरेसी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई द पीपल इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इन द ओपन एयर डू द वॉकिंग एंड डू द एक्सरसाइज, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो. सुबह उठकर सैर पर जाना अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. So morning energy, if you go for a walk, if you do the exercise, it is good for our mental health. मानसिक स्वास्थ्य means mental health. So दिन की शुरुआत जल्दी करने से हम सकारात्मक बन सकते हैं. So start the day early in the morning, we will be more positive. सकारात्मक means we will become more positive thoughts इरुक्कुम नम्मकिट्टा. So we will have the positive thoughts because we have a relaxed time. We will do the things better. We can plan the things better, and we will not be so stressed. So more positively we can work it out. Advantages of doing the exercise or morning walk in the early morning is हमारे शरीर में बेहतर रक्त संचार, the blood circulation will be more effective. मांसपेशियों में मजबूती आ जाती है, the muscles and all will become more tightened or become more strong, strength बंदरू. दिमाग तेज और साफ काम करता है, and the mind will become so sharp and it will work out clearly. So these are the advantages of doing the morning walk or exercise in the morning time. सोहनलाल त्रिवेदी की अन्य कविताएं पढ़ें. यू हैव टू रीड द अदर पोएम्स रिटन बाय सोहनलाल त्रिवेदी. सो फाइंड इन द गूगल सर्च and you can read the poems which is written by Sohanlal Trivedi. Hope you have understood the subject enrichment, question answers and look back exercise grammar part. If you have any doubt or clarification, you can put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.